एक्सप्लोर दिस ईयर अप टू दैट एक्सटेंड ना कि आपको कभी भी अपने बचे हुए सालों में रिग्रेट ना हो। फर्स्ट ईयर इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइम जहां आप अपने पैशन को, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फिगर आउट कर सकते हो। गाइस, टुडे if you won't watch the whole video ना, you will end up regretting rest of your college life परेशानी में कि what's the perfect road map, किस चीज को you should follow up. Today I am with you to discuss about how to go from 0 to 1 and the strategies to make over from 1 to 100. We will be also mentioning some of the daily routine tasks which will help you to stand out from the crowd. फर्स्टली वेलकम टू ऑल गाइस। आपकी लाइफ का ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज स्टार्ट होने वाला है और इस इनिशियल फेज में ना यू विल गेट मल्टीपल डायरेक्शंस टू चूज, वेदर इट वुड बी प्रोग्रामिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग, स्पोर्ट्स, यूट्यूब, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, all of them. And also you will be introducing by some of the college societies club जो आप सबकी इन सारी डोमेन्स में पुश करने में हेल्प करेगी। इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल मिस मत करना। हाँ, सब्सक्राइब करना तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो कंपलसरी है, बट स्टिल अ परफेक्ट रोड मैप डजंट एग्जिस्ट। गाइज, नेक्स्ट 3 से 5 साल की जो आपकी जर्नी होगी ना, वो सबकी अलग अलग होगी, तो कृपया करके किसी और के डब्बे में बैठने का प्रयास ना करें। यू नो व्हाट, यू आर द ओनली कैपेबल वन who will be deciding what to pursue next after watching the whole video. To decide your perfect domain ना, आपको हर एक डोमेन में घुसना पड़ेगा। This is the reality. This is the process of exploring. जितना मजा लेकर इसको करोगे ना, उतना ही मजा आपको अपनी लाइफ में आने वाला है। चलो, as promised to provide you the whole road map of 0 to 1, let's take a common example of programming only. तो यार, प्रोग्रामिंग कोडिंग में ना सबसे इनिशियल क्वेश्चन एक बच्चे का रहता है कि कौन सी लैंग्वेज से आई शुड स्टार्ट डूइंग। स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट, कौन सी लैंग्वेज परफेक्ट होगी मेरे लिए। Start doing up with any of the common languages. I prefer Java over it. If you know the reason, comment down, I'll let you know. Because you know what, in the future ना आपको वो चीज स्विच करनी पड़ेगी during interview time या फिर during any sort of conditions, and it's not a major concept या फिर बहुत complex हो जाएगा अगर आप स्विच करोगे ना। It will be very simplistic for you. एक बार आप प्रोग्रामिंग को डीपली समझ लें। Again, the most important part of the video, things to note down to go from 0 to 1. I want you all to be attentive here. Guys, firstly, consult with your teachers and seniors कि प्रोग्रामिंग में आप क्या क्या कर रहे हो। Secondly, यार, watch out the authentic creator जो इस बारे में बात कर रहे हैं। And the most important part is make a plan of action for a current month, for next 2 weeks जो आप pursue करना चाहते हो। And just यार 3 से 4 महीने if you will follow this plan consistently ना, you can successfully say कि आपने 0 से 1 का path cover कर लिया है। You are a good programmer now. Then to move on from 1 to 100 ना, you have to join several communities over same mindset of people जो आपको अलग अलग next level opportunities के बारे में बताए। Explore out different networking events, take part in competition, join your team in hackathons, follow up the iconic people in the same domain. Not in programming यार, if you want me to go deep down in any of your favorite domain ना, just hit me up on Instagram. I'll give you decent voice जिसमें एक शॉर्ट टर्म का रोड मैप मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद यू कैन टेक द फॉलो अप्स फ्रॉम मी एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो ना, I truly believe यार you have the capacity to stand out from the crowd. As promised, I'll be sharing some of the regular tasks you should do in your college life. The first is networking. It is the most vital thing which never limits you within your college. No matter whichever domain you are choosing na, you should have networks over there which will help you to grow. Today I will be breaking down each and every complex topic into subparts. I know yaar, you don't have exposure to the world. You are limited to your college class, your hostels, your group just. I know यार attendance वगैरह का criteria रहता है, but still there are several websites which offers you weekend events, weekend meetups. Initially यार, you don't need to visit any of the paid events. आप उस event के topic को check out कर सकते हो. If it's matching up with your domain, then definitely you should visit up out. But if you're still finding your domain ना, तो मेरे पर्सपेक्टिव से सारे मीटअप्स में चले जाओ, वीकेंड्स में होते हैं पर। योर इंट्रोडक्शन मैटर्स अ लॉट। यू नो व्हाट,
people remembers the way you make them feel. Your smiling face, the way you dressed up, the posture you own, eye contact, shaking of the hands matters a lot. It presents the level of confidence you have. Create your presence on LinkedIn for the next 3 to 4 years. Now, if you will make LinkedIn as your priority, it will blow you up with unlimited opportunities. Let's break down the algorithm of LinkedIn. If you have any achievements, now just post it. If you don't have achievements, you're going to the event, just post it, sharing your thoughts. Guys, this is the platform where you'll get real likely minded. मेरे नौजवानों, these are the major prerequisites which will end you up by choosing a perfect roadmap for you. Believe me, I am always with you. This is just a starting. Explore as much as you can. My best wishes are always with you. Thanks a lot.